हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल निर्मल टेक्निकल एंड माय नेम इज निर्मल शंकर। सो दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे हैं होपफुली। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्यूटोरियल आई वुड लाइक ask to you all, please like this video and subscribe to my channel निर्मल Technical to get new uploads, new update by me on YouTube. If you already subscribed to my channel, then thank you so much for that. So friends, as you know, nowadays Ansible tool series ongoing. I have already delivered two sessions on Ansible server. The first one was for Ansible overview, the second one was Ansible overview along with Ansible setup. So today I am going to share with you about Ansible server SSH connection with the target nodes. So मैं आपको आज ये शेयर करूंगा कि कैसे हम एंसिबल सर्वर को कैसे टारगेट नोड के साथ एसएसएच कनेक्शन स्टेबलाइज करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को दिखाया है कि एंसिबल सर्वर को कैसे हम सेटअप करते हैं क्लाउड सर्वर से। क्लाउड सर्वर सीएसपी दैट मीन्स क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एडब्ल्यूएस। मैंने आपको लास्ट सेशन एडब्ल्यूएस पे दिखाया था। सो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो एडब्ल्यूएस के ही सर्वर पर रहेगा। तो मैं आपको एक एजेंडा बता सकता हूँ, ओवरव्यू बता दूंगा, फिर अपन स्टार्ट करते हैं कैसे करना है अप्लाई, है ना। तो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट सेशन में ये बताया था कि कैसे हम एंसिबल सर्वर को सेटअप करते हैं। तो एक बार अपना क्विक रिकैप करता हूँ जो मैं लास्ट सेशन में डिलीवर किया था। हमने एडब्ल्यूएस पे एक मशीन लॉन्च की थी, एक सर्वर लॉन्च किया था इश्यू इंस्टेंस। उस पर हमने एक एक्स्ट्रा पैकेज एंटरप्राइज लिनक्स को हमने डाउनलोड किया था, जो कि उसमें बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। पहले उसको हमने wget के थ्रू डाउनलोड किया था एंसिबल सर्वर इस इंस्टेंस को लॉन्च करने के बाद। एंड देन आई डाउनलोडेड ऑल द डिपेंडेंसीज इन एंसिबल। So till now I have done this, okay, on the last session. So today, moving forward, I will perform some steps. Whatever I will create a Ansible user. I will do configuration some in Ansible server. Then I will create a stabilize SSH connection between the server and target nodes. Then I will give a demo about what is the use of Ansible server, how we can control, how we can manage the target nodes using the Ansible server. Okay, so let's start. So friends, if you remember in last session, I launched just only one machine issue instance where I downloaded where I done the Ansible setup, जहाँ मैंने Ansible को सेटअप किया था, Ansible सर्वर को सेटअप किया था। बट आज हमने ना टारगेट नोड्स के लिए भी मैंने दो सर्वर लॉन्च किया है, Ansible नोड 1, Ansible नोड 2। वन मोर थिंग, हमने लास्ट सेशन में जिस EC2 इंस्टेंस सर्वर पे Ansible को हमने सेटअप किया था, एक्चुअली मैं उस EC2 इंस्टेंस या वर्चुअल सर्वर को ऑलरेडी टर्मिनेट कर चुका हूँ। तो मैंने आज अगेन एक न्यू सर्वर को लॉन्च किया, बट ऑलरेडी मैंने सेटअप कर लिया है फुल सर्वर को। आप चाहो तो लास्ट सेशन को, लास्ट ट्यूटोरियल को रिफर कर सकते हो, वहां से आप देख सकते हो कैसे हमने एंसिबल सर्वर को सेटअप किया है। सो इन मूविंग फॉरवर्ड व्हाट स्टेप वी विल फॉलो, आई हैव रिटन डाउन हियर। सो Ansible server SSH connection setup with target nodes. This is our live agenda today. So first of all, we will define the target nodes IP. What I told you, the Ansible server wants to control the target nodes, but how? There should be a logical thing. So what is the logical thing?
how the Ansible server can communicate target nodes by defining the nodes IP in the inventory file on the Ansible server. First one is, so Ansible server will control the target nodes, but how? So the initial first step, we will define the target nodes IP in the inventory file on the Ansible server. Everything is logical, bro, dears, because Ansible server, if wants to communicate the target nodes, so there must be a some configuration on the Ansible server. So first one, we will define the nodes IP in the inventory file. Secondly, to activate this host file, inventory file, actually we will uncomment this one through Ansible configuration file. This one is the inventory file. You know, friends, inventory, what does it mean? Inventory, inventory, it is like the configuration restores. You heard, I think, I believe you heard, you will hear many times that inventory report. So this is kind of store. You can say the details of the configuration, like IP, node name. So it changes in terms of whenever you are using the term in which sector. If you're talking in about in if you are talking like in IP terms, so it is somehow about IP and the IP details. If you're talking in another platform, so inventory is the word which very important. So here in the Ansible, we are talking about inventory. That means we are talking about the nodes IP, target nodes IP. Okay. Third one is we will be creating a Ansible user on all the target nodes, including Ansible server. Again, I'm telling you, we will be creating an Ansible user on all the nodes, node that means target nodes, including Ansible server, to further work for the practical use of Ansible server. Okay. Fourth one is with sudo privilege. So we provide the sudo privilege. And then fifth one is that there is one SSD configuration file. So we will follow the all these steps. So whenever we perform the task on the uh, cloud server EC2 instance, so guys, you may more understanding what I am going to tell you. I mean to say these are the steps we will follow on the next upcoming time minutes. Okay. So we have already launched our EC2 instance where I have already installed the Ansible server. Okay. Let me change the host name. You can see here host name has been changed. Okay. Let me take the this. Okay. Then let me access this Ansible node one. So copy the public IP, open putty, and authorization. So I have to take the authentication private key from the download section. लोग जानते हैं जैसे कि हमें
लिनक्स पे अगर कुछ अपडेट करना है तो हमारे पास ये एक कमांड होता है यम अपडेट -y। ओके, राइट। It will take some time until I will launch again. I will launch the next one, Node 2. Okay, that was in the public IP. यार ये क्या सब बातें कर रही हो? ये सब क्या बातें कर रही हो? आवाज आ रही इधर बेवकूफ। So now I am going to access this Ansible Node 2. This one, taking the public IP. This is our Ansible server, and this is a target nodes. So let me change this target node name. So 7446. Host name Ansible node 2. Okay, this one is Ansible node 2, and let me also change this one. Host name Ansible node 1. Okay, friends. So I have already accessed all three EC2 instance. So let me tell you again. This EC2 instance, what I'm using as Ansible server, where I have already installed the Ansible setup. Second one is this is Ansible node 1. That means this instance I'm using as a Ansible node 1 target node, right? And the third one is that is also the EC2 instance, but I'm using as a Ansible node 2. Okay. So what is the next step? So we'll define the target node's IP in inventory file on the Ansible server. So this is Ansible server. So let me open the inventory file. So what is the path for that inventory file? That is etc Ansible and hosts. Okay, click on that. This one. Control L, or you can also write down clear. Then screen will be clear. Okay. VI etc Ansible then hosts.
Okay, so I will define here. If you see here, it is written here. This is the default Ansible host file. It should live in etc Ansible host. Element begin with the hash character. Blank lines are ignored. A host name IP can be a member of multiple groups. As I on your system, then I will write down here. Uh, Simple the name target node. Then IPs of the target nodes. Whatever you want to write down here, you can write down. You can change here also. If you want to write down here the name demo or something else, you can write down here. No problem here. Okay. Then target nodes IP, private IP. Okay. So first of all, I will take the first node one. What happened here? Okay. Okay. I will take this because I already told you these two nodes are the target nodes. Okay. Which target node? Okay. If I have picture, uh, what I told you in a previous session. Okay. Again, let me tell you. If you remember, let's say this is an Ansible server and because I have taken two nodes, so I in this example I will so share with you on taking the two nodes on this architecture view. Okay. Okay. So this is Ansible server. This is an Ansible server. I am talking about this one. Okay, let me map this one so that it could be more understand. If I talking about I am Ansible server about, so I am if I talking about Ansible server, that means I am telling you about this server, this one. If I talking about target nodes, Ansible node 1 or Ansible node 2, so that means I am talking about these nodes, these nodes. Okay, let me write down here. Node 1, nodes 2. I hope guys you have now understand what I am telling you here. This is Ansible server and these are the nodes, target nodes, and these nodes will be managed by this Ansible server. Okay. So same way I have launched three EC2 instance. This is for Ansible server where I have already configuration. I have done setup about Ansible server configuration, and these are the target nodes. Our today lab agenda, our today tutorial agenda is stabilize a SSH connection between Ansible server and these nodes. So I will do the same.
So for first one, what I will do, I have to define the target nodes IP, private IP. So let me take the private IP, this one. So this is the private IP. Okay. Then I will take the secondary node target IP, private IP, sorry, not public, private IP. Okay, guys. This is the private IP. Okay. If you see here, I have copied the private IP from the EC2 for the EC2 instance target nodes and pasted here in this section target node. Okay. Then press ESC and WQ, enter. Now the second step is I have to access this configuration file. If you remember in previous session, I told you in the last of my session, then this is a very important file, Ansible CFG. It will be useful. I will tell you next tutorial. That means for today, what I am telling you in this tutorial. So let me open this Ansible configuration file. Again, I am telling you right now what I am doing here. I am working on the only Ansible server. I have just opened the Ansible nodes, target nodes, but I have not like any configuration. I have not changed or any configured about the Ansible. I have just updated those machines, those servers. Okay, and these are this is the Ansible server. So what is the next command? What is the next action? So I have to open that Ansible configuration file. So same path is there. Just change the last. Same configuration, same path, but just change this here. CON, what is Ansible CFG? Open it. Okay. If you see here, what is the written here? Actually, the color is some change. So, some let's default values. Friends, one more thing. Here you can see it is written here inventory. If I want to, I told you, if I want to activate this inventory file, if I want to activate this inventory file where I have defined the target nodes IP. So I have to do uncomment. Currently it is commented. That means has sign is mentioned in inventory text. So I have to uncomment this one. You can see inventory written here, and also the path file is here, etc ansible host. That means मैंने आपको बताया ना कि जो हमने ansible etc ansible host फाइल में जो हमने भी आईपी डिफाइन की है टारगेट नोड के ansible सर्वर में, अगर हमको उनको एक्टिवेट करना है, इफ आई वांट टू एक्टिवेट, सो हमें इसको अनकमेंट करना होगा, राइट? हमने अनकमेंट कर दिया, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू प्रेस आई. अब अभी हमने इसको अनकमेंट कर दिया. यस, यू कैन सी हियर. सेकेंडली, sudo user I have to make as a root. That is sudo user I have to make as a root. Okay, so also I have to uncomment this one. Now WQ आप लोगों को समझ आया है कि नहीं आया? मैं आपको दोबारा बता देता हूँ. हमने पहले इन्वेंट्री फाइल में जाके दोनों टारगेट नोड्स की आईपी को एनसिबल सर्वर पे डिफाइन किया. क्यों डिफाइन किया? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज सर्वर एनसिबल सर्वर
how it will be recognized, how can communicate Ansible server to target nodes. So there is a first step, we have to define the target nodes IP to stabilize a communication between the Ansible server and the target nodes. देखिए जब तक हम एक पाथ नहीं बनाएंगे, आप सोचिए पहले लॉजिकल वे है, अगर हम किसी पॉइंट ए पॉइंट बी यानी सोर्स और टारगेट के बीच अगर हम कोई एक पाथ नहीं देंगे, वट एवर वो पाथ में अगर हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं देंगे तो वो कैसे पता चलेगा सोर्स को कि हमें टारगेट से बात करनी है, या टारगेट को पता कैसे चलेगा कि हमें सोर्स से बात करनी है. देयर मस्ट बी a समथिंग कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म मतलब कि हम किस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हम एक लाइक वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे चैनल, फ्रिक्वेंसी डिफिनेशन, एवरीथिंग. अगर हम एक रूट की बात कर रहे हैं, सिंपली लेट से हमें एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, तो देयर मस्ट बी अ रेलवे पाथ, ट्रैक. सिमिलरली यहाँ पर भी हमें एंसिबल सर्वर से अगर टारगेट नोड्स को एक आपस में कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करना है तो हमें एक एंसिबल सर्वर को कैसे मालूम होगा कि हमें किस नोड से बात करना है. तो उसके लिए हमने नोड्स की आईपी को यहाँ पे डिफाइन किया था. आई होप अभी इस बार समझ आ गया होगा. तो उस इन्वेंट्री फाइल को एक्टिवेट करने के लिए हमें उसको अनकमेंट किया. सेकेंडली जो सूडो यूजर है उसको रूट, जो हमारा रूट है, सूडो यूजर को ऐसे रूट करने के लिए उसको अनकमेंट किया. नाउ प्रेस W अगेन. अब मैंने क्या बताया, थर्ड स्टेप क्या है कि हमें एंसिबल, चूंकि देखो अभी हमने क्या है रूट यूजर वर्क कर रहे हैं एंसिबल सर्वर पे, इसी को इंस्टेंस जो हमारी है. बट हम एक्चुअली एक इन्वायरमेंट पे काम करने के लिए हम प्रेफर नहीं करते कि किसी को रूट रूट यूजर की प्रिविलेज दूँ, लाइक कि हम उसको रूट यूजर दूँ, अपना पासवर्ड शेयर करो. तो उसको हम एक न्यू यूजर क्रिएट करके देंगे, वट एवर. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने खुद का एक एंसिबल यूजर क्रिएट करेंगे. ओके. अच्छा, लाइनक्स प्लेटफॉर्म में हम कैसे यूजर ऐड करते हैं आपको मालूम होगा. हाउ वी कैन क्रिएट अ यूजर ऑन लिनक्स प्लेटफॉर्म. सो ऐड यूजर. You can say here user add. So friends, I have added user Ansible. Now I have to define the password for Ansible user. So changing password for user Ansible, new password. So I will also give the password as a Ansible. Means username is also Ansible and password is also Ansible. Okay. Now you can see here all authentication token updated successfully. Means I have already successfully created Ansible user with Ansible password. Like मैंने नया यूजर क्रिएट किया Ansible with password Ansible on the Ansible server, जो कि हमने थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लिया. जो ये थर्ड स्टेप है ना, द थर्ड स्टेप विल आई फॉलो ऑन फॉर ऑल द टारगेट नोड्स एज वेल. दैट मीन्स कि हमें Ansible यूजर को टारगेट नोड पर भी क्रिएट करना होगा, Ansible नोड पर. सो व्हाट इज द कमांड फॉर दैट वन. सो यूजर ऐड control L, or you can say write down here clear. So user add Ansible, then password. No, wait. Password Ansible. For which user a password? Okay. So new password. I also put here the Ansible password. मीन्स हमने जो Ansible यूजर है ना, वो टारगेट नोड पर भी मैंने Ansible यूजर को क्रिएट कर दिया विद द सेम पासवर्ड. That means the Ansible username is also Ansible, password is also Ansible. Okay. Same I will do on the target node second. Clear. Check again telling you can do write down here clear. For the screen clear also press Ctrl L. So user add Ansible,
then password, Ansible. Password is also Ansible. Friends, so till now I have done the third step. Meanwhile, I have created Ansible user for all the nodes, including the Ansible server. Fourth one क्या था कि will provide the sudo privilege. So sudo privilege okay. So sudo privilege हम कैसे देंगे? vi sudo. अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ कि हम अपने Ansible यूजर को sudo privilege देने जा रहा हूँ. वो कैसे देंगे? लिनक्स प्लेटफॉर्म में एक आपको दिखाऊंगा अभी. आई विल शो यू हाउ इट कैन बी डन. Yes, this one. You can see here it is written as allow root to run any commands anywhere. तो रूट के लिए तो पॉसिबल है, आप कोई भी कमांड चला दो कि उसको प्रिविलेज है. बट अगर आप किसी अदर यूजर को देना चाहते हो तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ हम उस यूजर का नेम देंगे एंसिबल. देन आई विल सेम राइट डाउन हियर नो all. Again, I am telling here, if I want to give the root privilege to my Ansible user, so you have to open that vi sudo, that file, and Ansible the username, then all is equal to all, and no password is colon space all. Same thing you have to do on all the servers. Now, node, same thing I also Ansible. Same thing I have to on all the last one, this one. एक बात और, हालांकि ये दिस इज द नॉट ओनली द मेथड फॉर privilege the sudo root user privilege to any other user, to any newly user created on the Linux platform. मतलब कि एक यही नहीं प्रोसेस है, और भी प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू आप एक यूजर को रूट प्रिविलेज दे सकते हो. यहाँ पे हमने एंसिबल यूजर देना है क्योंकि हमने एंसिबल यूजर क्रिएट किया है. प्रेस कॉलन WQ. सो अभी तक हमने क्या किया, व्हाट आई हैव डन टिल नाउ, आई हैव क्रिएटेड Ansible user on all the servers, target nodes including Ansible server, and I have also provided the root privilege to the Ansible user. Now what I will do, I will try to stabilize SSH connection between the nodes from the Ansible server. Let's see, one thing I have to do more, but I will tell you later than doing this. If I want to stabilize a connection, so the simple thing SSH, then the node's IP, target node IP. So let's suppose if I would wait, okay, this is our Ansible server. Okay, I have to stabilize the connection
Okay, let me open that picture so that it will be more clear. Now I am going to stabilize a connection between this Ansible server to this node, first one node. Okay. Again, I'm telling you, I am going to stabilize. I am going to create a connection. I am going to create communication between Ansible server to node one. Okay. So let me take the Ansible node one copy, Ansible node one private IP, this one, and going on the Ansible server and IP. So he's saying that, are you sure want to continue connection? Yes. What the happen here? Warning, permanently added to the list of known host. Permission denied. Okay. Okay. Now I'm going to tell you what is this. So let me open this file vi etc ssh hd config. Here I have to do some changes. What I need to do? Okay, so this you can read here. Permission root login yes. So I have to uncomment this. Means this should be activate. Okay, and this one. To disable tunnel clear into text password change to be host. So password authentication yes. This should be uncommented. That means it should be activated. And so what does it means? It is what I have done changes, what I have done modified this file here, what I have modified in this file. So I have activated this permit root login yes, and secondly password authentication yes, I have activated this, but unactivated, yeah, you can say deactivated this password authentication no. Same thing I have to do follow on the target nodes as well. So permit root login yes, now it is activated. Password authentication yes. अच्छा आप एक बात समझ पा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने इसको अनकमेंटेड किया, डेट मीन्स इट शुड बी एक्टिवेटेड, मतलब ये एक्टिवेट हो जाए पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस। फिर मैंने इसको डीएक्टिवेट क्यों किया? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा,
क्योंकि ये जब प्रोसेस होगा तो ये फर्स्ट टाइम इसको देखेगा। जब हम उसको एस 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 के थ्रू स्टेबलाइज करेंगे, एस 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 थ्रू कनेक्ट करेंगे, तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस, ओके। बट अगेन अगर हम इसको भी एक्टिवेट करेंगे ना तो इसको फिर मिलेगा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो। सो ये ना जस्ट लाइक ये हो जाएगा, एक बार मैंने उसको ऑथराइजेशन के लिए बोला यस, फिर उसको बोला नो, तो मशीन को पता नहीं चलेगा एक्चुअल करना क्या है, वो कंफ्यूज हो जाएगी सर्वर को। तुमने उसको यहाँ पे क्या कर दिया, अनकमेंट कर दिया, ताकि ये डीएक्टिवेट हो जाए, तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस हो जाए। डब्ल्यू क्यू सेम थिंग हमें लास्ट नोड पर भी करना है। मतलब ये वाला जो स्टेप है ना वो तीनों पे ही करना है, एस 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 कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके। प्रेस आई ऑन योर सिस्टम। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस, इसको हमने अनकमेंट कर दी, कमेंटेड कर दिया। और एक हमें ऊपर करना था, परमिट रूट लॉगिन यस। लास्ट में हमने इस एसएसटी सर्विस को ना रिस्टार्ट भी करना होता है। सो व्हाट हैपन, start SST, what happened? Let me take the again SSH. I'm forgetting, I think, but let me check the commands. System.
Okay. Okay, so I actually forgot that command for the SSD service start. I have to follow the systemctl start. Okay. So now I have restart the SSD service. Let me take the SSH connection. But remember, now I will log in as a Ansible user. So what is the process to existing login with the new user? Switch to new user. So switch user hyphen Ansible. Same thing. I have to do another node one. Switch user hyphen Ansible. Switch user hyphen Ansible. Okay, now let me take the first node SSH connection. Setup has been successfully done. SSH, yes. Password. So you remember what was the password for Ansible user? That was the also Ansible. ANSIBLE. Yes. Yes. Now you can see here from Ansible server. I have taken access the Ansible node 1. So let me take a one demo. You can see here there is no any file on Ansible node 1. You can see here there is no any file. If like you want to see that I have fired the command ls list up, but there is no any file. But I have taken this node from the Ansible server. Again I am telling you. अभी मैंने क्या किया ना, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इस एनसिबल सर्वर को इस नोड के साथ एसएसएस कनेक्शन स्टेबलाइज कर दिया हूँ। तो मैंने इसी एनसिबल सर्वर से इस नोड का एक्सेस ले लिया है। इस नोड का आई हैव टेकन द एक्सेस ऑफ दिस नोड 1 फ्रॉम द एनसिबल सर्वर। इस नोड को नहीं मैंने लॉगिन किया है, इस नोड को मैंने लॉगिन किया है यहाँ पे वो आपको दिखाने के लिए, बट मैंने एनसिबल सर्वर से इसका एक्सेस ले लिया है। एनसिबल सर्वर हमारा क्या है, ये है, ये देखो, ठीक है। बट आपको दिख क्या रहा है कि एनसिबल नोड 1, क्योंकि मैंने इस नोड 1 को एक्सेस कर लिया है। अभी मैं कोई फाइल क्रिएट करूंगा, आई विल क्रिएट अ फाइल फ्रॉम एनसिबल सर्वर। मैं क्रिएट करूंगा एनसिबल सर्वर से फाइल, बट क्रिएट कहां पे होगी, एनसिबल नोड 1 पे, क्योंकि मैंने उसका एक्सेस ले लिया है। सो देयर इज वन सिंपल कमांड, टच लेट्स से कोई टेस्ट फाइल क्रिएट करेंगे, एनसिबल के नाम से कर देता हूं। अभी देखो ये पे यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं वापस जाऊंगा, आई विल गो ऑन द नोड 1। यू कैन एबल टू सी हियर। कुछ पिक्चर क्लियर हुआ क्या? पिक्चर ये है कि अभी मैंने एनसिबल सर्वर से कई नोड के बीच में कम्युनिकेशन, नोड 1 के बीच में कम्युनिकेशन कर दिया है। मैंने शटअप कर दिया है, एसएसएस कनेक्शन स्टेबलाइज कर दिया है। तो मैं इस एनसिबल सर्वर से इस नोड को एक्सेस ले लिया हूँ, इस नोड को लॉगिन नहीं किया है, ठीक है। मैंने इस पे फाइल क्रिएट करूँ, वॉट जो भी अपडेट करना है वो यहाँ पे हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, इसका भी सिंपल एक, मैं यहाँ पे रिबूट कमांड करूंगा। आपको पता है लिनक्स मशीन को अगर रिबूट करना है तो क्या कमांड चलाते हैं, ठीक है। सूडो रिबूट करूंगा मैं, बट ये नोड रीसेट नहीं लेगा। दिस शुड नॉट बी टेकन रीसेट बिकॉज दिस इज द एनसिबल सर्वर। बट आपका जो ये मशीन है ना, ये रीसेट ले लेगा। अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ज़्यादा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा कैसे। देखो इसी का एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ, इसको थोड़ा साइज का कम कर देता हूँ, क्या है, ठीक है। चलो मैं इसको रिबूट करता हूँ, सूडो। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि आई विल फायर द कमांड sudo reboot फ्रॉम द एनसिबल सर्वर, बट दिस मशीन, दिस सर्वर शुड बी रीसेट, दिस शुड बी rebooted because I have access from the Ansible server this node. You can see here na, the host name is Ansible node 1. Same node I have access from Ansible server. You can see here. This server has been rebooted, but this is not problem. There is no any problem. You can see here. Now in for the command ls output there is nothing file because now
you have come back to your actual server, Ansible server, because this machine has been restarted. It is inactive. So friends, I hope you understand what was the concept of Ansible, how we can set up, okay, the communication SS connection between Ansible server and the target nodes. Let me take one more example because I have taken that node 2, node 1. So node 1 I have shared with you. Now let me take the SSH connection between the Ansible server and node 2. So again, I have take the private IP of the Ansible node 2. जैसे कि मैंने आपको Ansible नोड 1 के साथ दिखाया अभी, सेम चीज मैं Ansible नोड 2 के साथ दिखाऊंगा। देखो एक बात मैं बता रहा हूँ, अभी जो मैं एसएसएस और टारगेट मशीन का आईपी कर रहा हूँ ना, प्राइवेट आईपी, उसके पहले हमने सारा सेटअप कर लिया है, तब वो एक्सेस हो पा रहा है। क्या सेटअप किया है मैंने, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था कि हम इन्वेंटरी फाइल में पहले हम टारगेट नोड की आईपी डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, ये हम सभी ये सारा वर्क जो है ना हम एंसिबल सर्वर पे कर रहे हैं अभी, उसमें जाके उसको अनकमेंट करेंगे, फिर हम उसको सूडो यूजर को रूट प्रिविलेज देंगे। थर्ड वन स्टेप क्या है कि हम एंसिबल यूजर क्रिएट करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है कि हम उस एंसिबल सर्वर को रूट प्रिविलेज देंगे सारे वर्क को करने के लिए, क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि विथआउट रूट प्रिविलेज आप एक नॉर्मल यूजर से हर काम नहीं कर सकते हो एंसिबल सॉरी लिनक्स प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। उसके बाद हमने एस 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 करके एस जो फाइल है ना कॉन्फ़िगरेशन की, वहां पे जाके हम 2-3 चेंजेस करते हैं, 2-3 चेंजेस कि हम एक रूट प्रिविलेज को यस कर देते हैं, फिर उसको ऑथेंटिकेशन को यस कर देते हैं, ठीक है। फिर हम आगे का जो सारा वर्क है वो हम एज ए एंसिबल यूजर ही करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी नोड 1 और एंसिबल सर्वर के बीच में एसएसएस कनेक्शन करके दिखाया, राइट। अब ये हमने आपको दिखाया भी कि हमने एंसिबल सर्वर से हमने रिबूट किया था सर्वर को, किसको किया था, इसको किया था, बट हम एक्सेस यहीं पे थे और इस सर्वर ने रिबूट लिया था। मतलब आप एक रिमोट लोकेशन पे बैठ के आपके जितने भी टारगेट नोड हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया एग्जाम्पल। सेम चीज मैं नोड 2 के लिए दिखाऊंगा कि हमें अगर नोड 2 को एक्सेस लेना है, ठीक है, तो सेम कमांड है, क्या है। और एक बात और है कि अभी आप देख सकते हो कि मैं एंसिबल यूजर लॉगिन हूँ। ये ध्यान रखना कि जो यहाँ पे होता है ना ये एज ए यूजर लॉगिन होता है, तो हमने एंसिबल यूजर से लॉगिन नहीं रखा है। तो सेम चीज एसएसएच और टारगेट नोड की आईपी। तो व्हाट इज दैट एंसिबल सर्वर टू टारगेट नोड आईपी, दिस इज द प्राइवेट आईपी, ओके, नॉट पब्लिक, प्राइवेट आईपी, ओके। देन प्राइवेट आईपी and enter, it is asking to us what is the server is asking to us that are you sure you want to continue connection. Yes, I want the same. Yes. Okay, now password. If you remember friends, what I have done, set up the password for Ansible user. That one was Ansible. Okay, again, here you can see Ansible server, but here you can see Ansible node 2. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने सर्वर से नोड 2 को एक्सेस कर लिया हूँ। अब आपको देखोगे ना यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है एंसिबल नोड 2। आपने सर्वर से एंसिबल नोड 2 को एक्सेस कर लिया रिमोटली, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको मैं आपको सिंपल लास्ट कमांड करके दिखा दूंगा, ओके, कि यहाँ पर मैं कोई अभी ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा एंसिबल नोड 2 है, डेट वन इज एंसिबल नोड 2। अभी आप देखोगे यहाँ पे कोई भी फाइल क्रिएट नहीं है, बट मैं आई विल क्रिएट अ फाइल टच निर्मल, ओके। This file has been created, but remember this file has been not created on the Ansible server. It has been created on the node 2. Okay. You can able to see now here Nirmal. Okay. Last is the best example how we can like ensure that what I'm doing here it is actually performing on the node. File has been created, but it might be some confusion you have that this file has been created on Ansible server. No, it has been created on Ansible node 2. The best example, I will do the reboot the server from this server, Ansible server, but it will not be rebooted because I have accessed the node 2. So sudo reboot. Yes, it you can see here close remote host connection closed by remote host, but this is still accessible Ansible server. Now you come back to your actual server, Ansible server. You can see here where I am firing the command ls, no file is there. But this secondly node must be rebooted. You can see here it has been already rebooted. We cannot do anything. I am not able to access this node 2.
So this is the process. This is the overview of Ansible, and I already told you how we can set up, how can we communication, how we can stabilize the communication between Ansible server and Ansible nodes, target nodes. Yes, you can see here the software cause connection abort means the node has been rebooted. Node has been already rebooted. So एक बेस्ट टूल है ये Ansible. आप रिमोटली आप जितने भी नोड को कंट्रोल करोगे, आपने एक कनेक्शन कर लिया, उसके बाद वट एवर आप कुछ भी करना चाहते हो टारगेट नोड पे। एक बात और है, अभी ये मेरा सीरीज का थर्ड वीडियो है, मैं आपको आगे और भी बताऊंगा। ये भी क्योंकि कंप्लीट हमने एक प्रोसेस बता दिया कैसे हमने टारगेट नोड के ऊपर हमें काम करना है। लेकिन थिंक अबाउट दैट, ये 2 नोड है तो आपको ये लग रहा है 500 नोड होगा तो क्या आप 500 नोड को वन बाई वन ऐसे कनेक्शन करोगे एसएसएस? नहीं होगा। पॉसिबल तो कह सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल तो कुछ इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आप 24 घंटे बैठ के उसको आप एक एक करके कर लोगे, बट दैट वॉल दैट लाइक दैट विल नॉट बी अ वेरी स्मार्टली वर्क। वो कोई स्मार्टली वर्क नहीं होगा, क्योंकि फिर ऑटोमेशन का मतलब क्या हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा वो भी कैसे हम कर सकते हैं। हमें एक एक करके कनेक्शन नहीं करना होगा, हम कैसे एक ऑल टुगेदर, अगर कोई हम एक एक 500 नोट्स पे एक साथ हमने कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है, जैसे हमने अभी एक फाइल क्रिएट की थी, अगर हम चाहते हैं कि एक साथ 500 नोट पे एक बार में एक फाइल क्रिएट हो जाए, वो कैसे करेंगे? लेट्स वेट, आई विल बी बैक फॉर दैट वन। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा वो कैसे करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। एंड दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको सीख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल निर्मल टेक्निकल। थैंक यू ऑल, बाय बाय।